Windproof module redefining reliability. Hello everyone, I'm Joey. In our previous videos, we have seen the windproof module stand strong in hailstorms, snowstorms, and hurricanes. But today, we are pushing it even further. Our partners are about to put it through the toughest test yet to show you just how powerful its anti-burst capability really is. Now, let's check it out. Finally viewers, हम हार नहीं मानने वाले। ये साइज है वो बर्फ का जो सबसे बड़े साइज की बर्फ है। देखते हैं इसका असर क्या होता है। तो अब मेरे साथ वकार साहब हैं, तो वकार साहब से मैंने इनको ये वाला बड़े साइज का गोला दिया है कि वो पहले एंड टाइप के ऊपर मारेंगे, उसके बाद जॉलीवुड के हेल रेजिस्टेंट पैनल पे मारेंगे। तो वकार साहब आप ट्राई करें, देखते हैं कि आप इनमें से किस पैनल को तोड़ पाते हैं। ओहो, आप ये देख रहे हैं कि नॉर्मल एंड टाइप पैनल जो है वो एक बड़े साइज के गोले से टूट चुका हुआ है। अब सेम साइज के गोले को हम जॉलीवुड के ऊपर भी मारेंगे और हम वकार साहब से बोलेंगे कि वो सेम इसी साइज के गोले को जॉलीवुड के पैनल के ऊपर भी मारेंगे। वकार साहब स्टार्ट। तो इस वक्त मेरी गाड़ी भरपूर तरीके से इस सोलर पैनल के ऊपर खड़ी है। मैं इसको रिवर्स भी करूंगा। आप देखते हैं कि रिवर्स करते हुए इसके वजन क्या उठाता है या नहीं उठाता। अब मैं इसके फ्रेम के ऊपर से उतार रहा हूं और फ्रेम इसका स्टेनलेस स्टील का फ्रेम है। तो लेट्स सी, अब चेक करते हैं। मैं उतर के देखता हूं कि क्या पोजीशन है, क्योंकि इस गाड़ी का वजन अच्छा खासा वजन है। बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि आलस्विन का वजन भी इस सोलर पैनल ने सस्टेन कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा क्लोजली इसको मॉनिटर करना चाहूंगा। मुझे कहीं कोई एक स्क्रैच भी नजर नहीं आ रहा, कोई एक क्रैक भी नजर नहीं आ रहा। Witnessing those shocking footage from customer tests, where cars and motorcycles drove directly over the windproof module, and the module remained completely undamaged. The core behind this durability lies in the fully tempered glass of the windproof module. As many know, many steel glass modules on the market use semi-tempered glass on both sides. However, the windproof module using conventional single glass bifacial structure is designed for higher durability and reliability. Specifically adopts fully tempered glass. Some may ask, why can't dual glass modules use fully tempered glass? There are two key reasons. One, it would significantly increase costs, and the other is make the module exceed weight limits, affecting installation and usability. Now let's talk about the robustness of fully tempered glass. During production, the glass is heated to a high temperature near its melting point and then rapidly cooled. This process creates over 19 megapascal of surface compressive stress, making it 1 times stronger than semi-tempered glass. It's why the windproof module surface offers exceptional burst resistance. In contrast, the main issue with semi-tempered glass is its uneven stress distribution, which is the primary reason it's more prone to cracking. In contrast, the biggest problem with heated strength glass is the uneven stress distribution. This is also the main reason why it's prone to bursting. So with the integrated fully tempered encapsulation solution, the windproof module significantly improves impact resistance and safety. Whether facing external impacts or temperature variations, it performs with unwavering stability.